Hello everyone, welcome back to SHIKSHA KENDRA UNNAYAN Society, SILIGURI, West Bengal. So today we will be solving sample question paper, subject English 202 secondary course. Time you will be getting 3 hours and maximum marks is 100 marks. So today we will be talking about how to solve the question paper. ओके आपको मैं पूरा आज क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कितना मार्क्स कैरी करेगा वो क्वेश्चन, हर एक चीज़ आज मैं आपको बताने वाली हूँ. तो आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखिए. नोट नंबर 1, देयर आर 33 क्वेश्चंस इन ऑल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. यहाँ पे टोटल या नीचे टोटल कितना क्वेश्चंस है? 33 क्वेश्चंस है और सभी कितने भाग में बांटे हुए हैं? 2 भाग. नंबर 2, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. ये सारा क्वेश्चंस आपका कंपल्सरी है, आपको करना ही पड़ेगा. 3, मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट. देखिए हर एक क्वेश्चन के साइड पे आपको क्या मिलेगा? मार्क्स. जैसे कि ये बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ये क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे क्या है? मार्क्स भी लिख दिया है. हर एक क्वेश्चन के यहाँ पे आपको मार्क्स भी मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 4, question number 1 to 16 are objective type question in sub parts that include MCQ, fill in the blanks, true or false, match the following one word answer type question. तो नंबर 1 to 16 तक, 1 to 16 तक नीचे दिए हुए 1 to 16 तक क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जिसमें क्या क्या आ सकता है? MCQ आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, ट्रू और फॉल्स आता है और फिर आपका मैच द कॉलम वन वर्ड आंसर भी आता है. Now number 5, question number 17 to 22, 24, 31 to 32 are short answer question carrying 2 marks. तो question number 17, 22, 24, 31 and 32 में क्या आता है? आपका short answers आता है. ठीक है, जिसका कितना मार्क्स होता है? 2 मार्क्स होता है. Question number 6, question number 33 is carrying 3 marks. Answer to this question should be not exceed 40 words. तो 33 6 में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33 कितने मार्क्स के होता है? 3 मार्क्स का होता है. तो आपको कितने वर्ड्स में आंसर लिखना है? 40 वर्ड्स में आंसर लिखना है, ना ज़्यादा ना कम, बस 40 मार्क्स में. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 23 is carrying 4 marks. आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सक्रीड 100 वर्ड्स. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस भी क्वेश्चन में 4 मार्क्स हो तो आपको 100 वर्ड्स में लिखना है. कोई भी क्वेश्चन में अगर 3 मार्क्स मिल रहा है तो 40 वर्ड्स में लिखना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 25 इज अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कैरिंग 6 मार्क्स. आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सक्रीड 150 to 200 वर्ड्स. तो क्वेश्चन नंबर 25 एक लॉन्ग आंसर है. नीचे है क्वेश्चन नंबर 25, आपको मैं बाद में बोलूँगी. ये कितने मार्क्स के लिए है? 6 मार्क्स के लिए. तो आंसर आपको कितने वर्ड्स में लिखना होता है? 150 to 200 वर्ड्स में. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 26 to 27 हैव 2 टेस्ट आइटम इन सब पार्ट्स ऑफ 1 मार्क्स ईच. तो क्वेश्चन नंबर 26, 27 में क्या होता है? 2 टेस्ट आइटम होता है इन सब पार्ट्स, जिसमें कितना मार्क्स कैरी होता है? 1 मार्क्स. Now 10, question number 28 consists of 3 test item in sub parts of 1 marks each. Question number 11, 29 to 30 consist of 4 test item in sub parts of 1 marks each. तो कितना टेस्ट आइटम मिलेगा आपको? 4 मिलेगा इन सब पार्ट्स, और हर एक सब पार्ट्स का कितना मार्क्स होगा? 1-1 मार्क्स होगा. तो यहाँ पे मैंने क्या एक्सप्लेन किया है अभी तक? क्वेश्चन नंबर में कितने मार्क्स का क्वेश्चन मिलने वाला है. 1 में कितना मार्क्स का मिलने वाला है, 2 में कितना मार्क्स का मिलने वाला है, 3 नंबर का क्वेश्चन में कितना मार्क्स मिलने वाला है वो. और जब भी आप मार्क्स देखेंगे, जैसे कि अगर आपको देखा कि 3 मार्क्स के लिए है तो आपको 40 वर्ड में लिखना होगा आंसर. अगर 4 मार्क्स के लिए है तो 100 वर्ड्स में लिखना होगा आंसर. अगर 6 मार्क्स के लिए है तो 150 to 200 वर्ड्स में आपको लिखना होगा. तो दिस इज ऑल द पैटर्न ऑफ मार्क्स. ओके, हर एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स के लिए आता है, कितने वर्ड्स में लिखना चाहिए. अब हम देखेंगे कि कैसे टाइप का क्वेश्चन आएगा आप लोगों को. देखिए पार्ट ए, सेक्शन ए, रीडिंग. रीडिंग मतलब पढ़ना. आपको पढ़ के आंसर लिखना होता है. यहाँ पे यू डोंट हैव टू यूज योर ओन ब्रेन, यू डोंट हैव टू राइट अ आंसर फ्रॉम योर syllabus or a chapter wise, okay, but you just have to read the following passage and you have to answer the following question. Read the following passage carefully and answer the question that follows. पहले आपको ये पैसेज पढ़ना है, फिर नीचे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर्स आपको लिखना है. लेट्स रीड द पैसेज फर्स्ट.
In a city, never mind what it was called, there lived a small girl of about 5. The little girl had a mother and no one else. They lived together, the two of them, not well, not badly, but life of some hardship. The mother was a chairwoman, the income was mere ever coped, had to be saved, but the girl was fed, dressed, and had shoes on her feet, and the mother brought a lot of different goodies from the hospital. Some candies, some apples. The patient often gave her treat, especially when they were being discharged. They were too happy to bother about carrying these bags and go crave them away to the little girl's mother. They even gave away oranges, but patients who had oranges to give away were few and far between. Perhaps they went to other hospital, or perhaps they were discharged less frequently. Anyhow, this has nothing to do with oranges. We will still leave, the mother joked. We will still leave, the girl agreed. Frankly speaking, the girl badly needed a wonderful blue ball which she and her mother had seen in a toy shop. She felt they simply must acquire it for a truly happy life. If you remember what it was like when you were 5, you will understand what the girl felt when the blue ball finally turned up in the girl's hand. When the ball bounced, the little girl bounced, and even mother gave a little bounce, because happiness makes everyone bounce a bit. Now, this is a whole passage. Okay, you have to read it carefully. आपको सारा नीचे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर्स यहीं पे मिलेगा. ओके, ये 4 वुमेन वर्ड इस पैसेज में मिलेगा. 4 वुमेन का मतलब क्या है? अ वुमेन हु इज एम्प्लॉयड टू क्लीन एन ऑफिस. कोपेक मीन नेम ऑफ करेंसी, मनी यूज्ड इन रशिया एट दैट टाइम. कोपेक का मतलब क्या है? करेंसी का नाम. जैसे इंडिया में होता है रुपीज़, जैसे कि दुबई में होता है दिराम्स, वैसे अमेरिका में होता है डॉलर्स, वैसे ही कोपेक एक क्या है? करेंसी का नाम है जो यूज होता था रशिया में. Number 1. Based on your understanding of the above passage, write true or false of any 3. तो ऊपर में आपका पैसेज दिया हुआ है, जो भी आप समझ पाए उसके हिसाब से you have to write whether it is true or false. 1. The passage highlights the concern of a mother for her child. True or false, you have to write. The mother and the daughter were not generally satisfied with what they had. Number 3. Patients who gave away oranges were less in number because they discharged less frequently. Question number 4. The girl wanted to have candies. Whether it is true or false, you have to write, but you have to write only 3. आपको हर एक क्वेश्चन में ये अच्छी तरीके से देखना है कि कहाँ पे any 2 लिखा है, any 1 लिखा है या फिर any 3 लिखा है. Number 1 क्वेश्चन में क्या लिखा है? any 3. You have to do only 3 questions out of 4. Number 2. Answer the following question in one word, any 3. यहाँ पर भी आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करना है. Number 1. What is the currency of Russia? मैंने ऊपर में ही बोल दिया है कोपेक. हाँ. Number 2. How many members are there in the family? You have already understood the passage. Now you have to write the answer. 3. What did the mother do? 4. Who bounced with the ball? 3. Pick out the correct word as instructed from the above passage, any one. तो above दिए हुए ऊपर में दिए हुए पैसेज से ये वर्ड का करेक्ट मीनिंग निकालना है. ठीक है, मीनिंग और या फिर जो भी पूछा गया है उसका बारे में लिखना है. एनी वन आपको दोनों में से एक ही कर सकते हैं. 1. अपोजिट ऑफ प्लेंटीफुल का मतलब क्या है? मर्ज, बैडली, वंडरफुल, कोपेक. नंबर 2. मीनिंग ऑफ गुडीज क्या है इसका मतलब? टास्क, पेनल्टी, प्रेजेंट, कैंडीज. नाउ कम सेक्शन बी, एंड सेक्शन बी क्या है? राइटिंग. यहाँ पे आपको लिखना होता है. ठीक है. Number 4. Answer the following question with reference to the context below. अब फिर से यहाँ पे you have to answer the following question with the reference of the context. You are Debashri, a resident of Siliguri, West Bengal. You have to write a letter to the editor of a national daily drawing attention towards the difficult faced by differently abled people at a tourist place. तो यहाँ पे आपको एक लेटर लिखना है. राइटिंग मतलब यहाँ पे आपको रिपोर्ट लिखना होता है, नोटिस लिखना होता है या फिर लेटर राइटिंग होता है, कुछ भी मिल सकता है. राइटिंग मतलब यू हैव टू राइट इट बाय योर सेल्फ. सो नाउ थिंक दैट यू आर अ देबाश्री. ओके, यू आर अ देबाश्री and you stay in Siliguri, West Bengal. Now you have to write a letter to the editor of a national daily drawing. What you have to write in that? The difficulty faced by differently able people at the tourist place. तो आप
एक देवाश्री नाम का आदमी है, आप सिलीगुड़ी में रहते हैं, अब आप लेटर लिख रहे हैं एडिटर को ऑफ अ नेशनल दिल्ली। क्या बोल रहे हैं आप उस लेटर पे? आप ये बोल रहे हैं कि जो भी डिफरेंटली एबल पीपल है, डिफरेंटली एबल पीपल मतलब जो हैंडीकैप्ड है, ओके। आजकल हम लोग हैंडीकैप नहीं बोलते हैं, डिफरेंटली एबल बोलते हैं। डिफरेंटली एबल का मतलब वो लोग उन्हीं के, जैसे कि दोज हु आर ब्लाइंड, they have a power to sense, yes or no, they have a power to sense, क्योंकि जो भी अंधा होता है वो सेंस कर पाता है कि कौन है रूम में, कितना जन है, वो सेंस कर पाता है। तो उन लोगों के पास एक डिसएडवांटेज है तो कुछ एडवांटेजेस भी है, वो लोग डिफरेंटली एबल है, ठीक है। जो हम लोग नहीं कर पाते, आंख बंद करके हम लोग नहीं कर पाते, वो अंधा होके भी कर पाते हैं। सो दैट इज़ वाई वी डोंट कॉल देम अ हैंडीकैप, वी कॉल अ डिफरेंटली एबल पीपल। तो उन लोगों को टूरिस्ट प्लेसेस में थोड़ा क्या हो रहा है, डिफिकल्टीज हो रहा है। तो इस विषय में आपको कुछ लिखना है टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल दिल्ली। Choose the correct alternative of the following question. Now you have to choose the alternative of the following question. Select the appropriate subject of this letter. A. Drawing attention towards differently able people. B. The differently able neglected or misunderstood. C. Tourist places are an inconvenience to differently able people. D. Inconvenience faced by differently able at tourist spot. Or you can do this as well. कोई भी आप एक कर सकते हैं। 2. Select the option that completes the concluding line appropriately. I hope that my letter will help spread awareness about the issue, lead to action against all authorities responsible at tourist spot, improve curriculation of the National Delhi. D. Result in positive review by the readers. Number 3. Select the option with relevant aspects that Devasri should select for this letter. Number 1. The newspaper name. Attached proof to the newspaper subscription. Devasri's address. 4. Formal tone. 5. Accepted date of the letter received. So you can write any 1 or 5 which you think that it is appropriate. 1 or 5 option B. 2 and 3 option C. 3 and 5 option D. 1, 3 and 4. Okay. So this is how you have to write. Now question number 4. Which option should Devasri select to elaborate on the difficulties faced by the differently able people? Devasri को कौन सा option select करना चाहिए to elaborate on the different difficulties faced by the differently able people? Number A. Absence of ramp of wheelchair, unclear toilet, unsuitable visiting timing, tourist guards untrained in sign language, absence of ramp for wheelchair, tourist guides untrained in sign language, unsuitable visiting timing, uncleaned toilets. तो इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन ठीक लगे आप वही चूज कर सकते हैं। Number 5. Devasri shared some suggestions to her letter to address the issue. Select the option that helps her complete these suggestions appropriately. In my opinion, Number 5. Devasri shared some suggestion in her letter to address the issue. Select the option that helps her complete this suggestion appropriately. In my opinion, the media can play a pivotal role in transforming people against negligence to the need of differently able at the tourist spot shall go a long way in bringing about a positive charge. तो आपको आंसर यहाँ दिए हुए ऑप्शन में से ही एक लिखना है। A, B, C, D दिया है, जैसे कि A में belief and traditions, composing songs, perception and attitude, questioning and authorities, preferences, protesting, interaction, keep minimum interference. Now number 6. Select the option that correctly justify the choice of the concluding portion of this letter. Number 1. I expect the authority to take step on the issue. Please post my thought in your newspaper. I hope my view get published in the column of your newspaper so that the issue may garner more public support and awareness. Which one do you think the correct answer? A. Yes to option 1 because of the authoritative tone. B. No to option 1 because of the informal tone. C. Yes to option 2 because of the tone of polite expectations. D. No to option 2 because of the certainty in the
tone. तो ये क्वेश्चन पढ़ के आपको कौन सा ऑप्शन ठीक लगे कि उन लोगों का ये ऑप्शन ठीक है. 1 बिकॉज ये क्या है, एक ऑथोरिटेटिव टोन है. नहीं, क्योंकि ये इनफॉर्मल टोन है. हाँ, because the tone of the polite expectations. No, 2 options because of a certainly in the tone. So you have to write whichever option do you think it's correct, you have to choose one. Number 5, answer the question given with reference to the context below. ये है 4 मार्क्स के लिए. The Secretary of the Janata Group Housing Society, Push Vihar, New Delhi, has to write a notice about the suspension of the water supply. It will be suspended for 8 hours 10 am to 6 pm on the 6th of March for cleaning of the water tank. तो आप है द सेक्रेटरी ऑफ द जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पुश विहार न्यू दिल्ली. तो आपको एक नोटिस लिखना है ये बताकर उस नोटिस में कि वाटर सप्लाई हम 6 मार्च को बंद कर रहे हैं 8 घंटे के लिए 10 बजे से लेके 6 बजे तक. क्यों? क्योंकि हम लोग वाटर टैंक क्लीन कर रहे हैं. ये जनाकर आपको एक नोटिस लिखना है. You have to write whatever the information you have to give. It is written, no? So you have to write only that. You don't have to add more. Now choose the correct alternative of the following question. Number 1, select the most appropriate title for the notice. अब ये notice के लिए कौन सा आपको लगता है कि एक appropriate topic है वो choose कर सकते हैं title. A, attention, store water for the day, suspension of water supply, no water supply. कुछ भी लिख सकते हैं. और you can also do number 2. Select the most appropriate conclusion for the notice. आपको क्या लगता है कि conclusion, proper conclusion क्या होना चाहिए? A, stay informed. B, collaboration solicited. C, stay prepared, inconvenience regretted. 3, choose the point which the secretary will advise his notice. A, to check water supply. B, to curb water consumption. C, to store water for a day. D, all of this. 4, points that must be written on the notice. क्या चीज़ है नोटिस पे लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वही लिखना है आपको. ऑप्शन ए, डेट ऑफ वाटर सस्पेंशन. बी, ड्यूरेशन ऑफ वाटर सस्पेंशन. सी, रीजन फॉर वाटर सस्पेंशन. एंड डी, ऑल ऑफ दिस. इफ you have to write all of this A, B and C, you will choose all of this. Number 5, would this notice reflect the name of the Janata Group Housing Society? क्या ये नोटिस नेम रिफ्लेक्ट करता है जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का? A, no because the title makes it clear. B, yes because it makes it informal. C, yes because it is the issuing body. D, no because it is understood through the signature. Now number 6, question given below are based on the given text. Read the text carefully and answer the question. अब नीचे दिए हुए फिर से थोड़ा सा पैसेज पढ़ के आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर लिखना है. ये कितने मार्क्स के लिए है? 4 मार्क्स के लिए है. Ravi is a member of coexistent a school club that actively promotes animal right and care. He has to write an article emphasizing the need for preventions of curely, to animals and peacefully coexistence between animal and the human being. This passage is about the animal and the human being, the prevention of it. Now number 1, which suggestion from the given below would be appropriate for Ravi's article? नीचे दिए हुए कौन सा suggestion would be appropriate रवि के आर्टिकल के लिए, कौन सा एकदम appropriate होगा? Number 1, reducing human wildlife conflict, banning habitat destruction, creating more wildlife sanctuaries. 2, protecting the environment, penalizing poachers. 3, strengthening executive of animal rights law, increasing awareness, reducing human wildlife conflict. 4, creations of more wildlife sanctuaries and promotions of research in animal. Which one will be the correct suggestion? Option A, option 1, option 2, option 3 and option 4. Which one you think it's appropriate, you will write that. और ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप नंबर 1 और ये नंबर 2 भी कर सकते हैं, कोई एक आप कर सकते हैं. Select the option that lists an appropriate title for Ravi's article. You have to choose the correct option which will list an appropriate title for Ravi's article. Okay. A, man and animal are struggle to coexist.
B. Remodeling the future by peaceful coexistence. C. The rehabilitation and conservation of species. D. Smart moves, survival of the fittest. तो आपको कौन सा ये टॉपिक टाइटल अच्छा लगेगा इस पैसेज के लिए वो आपको एक चूज करके लिखना है. Number 3. Which option would help Rabi with the appropriate organization of relevant ideas for this article? Number 1. Expressing concern about several cases of cruelty to animals, exploring the reason, standing the effect, providing suggestion for peaceful coexistence, presenting a conclusive outlook. 2. Stating the effect of cruelty to animal, presenting a concluding viewpoint, providing suggestion for peaceful coexistence, expressing concern for animal cruelty, exploring the reason for cruelty to animal. 3. Introducing the purpose of the article, information about policy and law for animal protecting, exploring the reason for the law, providing suggestion for peaceful coexisting, presenting a plea for awareness. 4. Exploring the laws for animals protection, questioning the efficiency of the law, providing suggestion for improvement in the behavioral towards animal, introducing the purpose of the article, appeal for joining coexistent. तो ये आपको ये पैसेज समझ के आंसर लिखना है, ठीक है. ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4. नाउ नंबर 4. एन आर्टिकल डज नॉट इंक्लूड. आर्टिकल क्या इंक्लूड नहीं करता है? ए. टाइटल ऑफ द आर्टिकल. बी. डेट ऑफ द आर्टिकल ऑन विच इट वॉज रिटन. सी. द कंसर्न ऑफ द राइटर. डी. नेम ऑफ देम हु हैव गॉन थ्रू द इशू. नाउ नंबर 5. Read a sentence from Ravi's article draft and help him complete it by selecting the most appropriate option. An animal find their natural habitat shrinking daily. Their interaction with humans keep rising, often to the dash and to the human and with dash for the